हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि हाउ टू लर्न लॉ, लाइक लर्निंग लॉ बाय प्रैक्टिसिंग इट, और फर्स्ट लर्न द लॉ देन प्रैक्टिस इट. Because you might have also heard key people saying, your seniors mostly, that you cannot learn law only through reading it or by sailing through books, law books, and you could only in actual learn law when you practice it in the courtroom. So you might have heard all these things stuffs because these are real and being perpetuated from generation to generation, from seniority to juniority. I've also heard that. And when now I have been for few months in the practice area, like I have been interning, I've been going through courts and meeting lawyers and seeing my senior also. So I thought ki I should differentiate it. Like I have been on the approach that ki you should learn law first. But I have also seen people ki who have good practice in law now, but they have hardly learned law through books, and majorly their learning came by experience, what they have learned by uh, getting to know things related to their cases. Like whatever the case is, they research it, they go to the court, and the thing is done. So first of all, I would say ki there are two aspects. Like for example, uh, one students are those type, like myself also, who believe that ki you should learn law very wholeheartedly and then go into practice. That would build your confidence, and you would know things now, then you will only practice it. I have that approach, and I'm going through that approach only. I'm following that. But my senior, once we were just talking, and he told me that ki Sultan, you should be focusing more on practical issues. Like जो केस आपका चल रहा है, आप उस पे ज़्यादा ध्यान दो. Besides ki whatever doubts you have jotted down in your notebook. Besides researching on that, you must focus more on what cases we do have in the office. So he gave me his example. He said ki I hardly learn law in college. I hardly learn law book from books, and whatever I'm learning is that ki whatever you tell me when we have a case and you research on that, or I'm learning through experience only. So then I deliberated on it ki whether I am on wrong track or right track. Then finally I came to the conclusion, and I still think ki the approach I am following is more suitable and much better than that, because that particular approach है ना, एक inherent उसका उसका एक inherent वो है, default है. सो उसका एक अपना इनहेरेंट इशू है, उसमें एक प्रॉब्लम है. द थिंग इज दैट कि लाइक इफ आई डिड नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन लर्निंग थ्रू बुक्स और रीडिंग और रिसर्चिंग और हैविंग माई डाउट्स क्लियर एंड नोटिंग डाउट वट एवर इशूज आई एम लीगली फेसिंग. अब मैंने नहीं किया वो चीज़. ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन आई हैव नाउ कंप्लीटेड, आई एम नाउ एन एडवोकेट एनरोल्ड, बट अब मेरे पास केसेस नहीं है. हाउ वुड आई लर्न लो? मतलब अब फिर क्या मेरे को ये करना पड़ेगा कि मैं जिसके यहाँ पे इंटर्नशिप करूँगा या फिर प्रैक्टिस करूँगा, उसके पास जो केस आता रहेगा, देन आई वुड हैव टू वेट फॉर दैट कि आज ये केस आया तो आज ये पढ़ लेते हैं. तो मतलब जब तक वो केस नहीं आएगा तब तक मेरे को वो चीज़ पता नहीं होगी, पता नहीं होनी चाहिए. मान लो 4-5 साल तक नई चीज़ें पता चली हमें फिर. सो जो अप्रोच हमारी सर की है या फिर काफ़ी लोगों की हो सकती है, द थिंग इज दैट कि माई सीनियर और दोज पीपल हु एडवोकेट दिस फिलोसफी, आई थिंक कि उनके पास केसेस होते हैं अच्छे. लाइक हमारे सर ने ही नेवर स्पेंड मच टाइम विद अदर सीनियर्स, और ही डिड नॉट वर्क विद अदर सीनियर्स फॉर मच टाइम. हार्डली 6 महीने या 1 साल किया होगा उनको, एंड ही हैड हिज केसेस. तो उनके पास जो केसेस आते हैं, ही रिसर्च ऑन दैट. जो भी इनकी टीम है, हम लोग हैं, हम रिसर्च करके जो बताते हैं उनको, एंड हम उनका लर्निंग इस तरह चलता रहता है, हमारा भी चलता रहता है. बट इफ़ मी और एनी अदर स्टूडेंट लाइक यू और एनी कुड बी, अब उसके पास केसेस नहीं है स्टार्टिंग में, देन ही शुड वेट कि जब तक वो केस नहीं आएगा तब तक मेरे को चीज़ नहीं पता होनी चाहिए. आई डू नॉट थिंक इज़ वेरी वाइज टू बी.
सो एटलीस्ट व्हाट आई वुड से इज दैट कि जो आपके बेसिक्स लॉज हैं, लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, प्रोसीजरल लॉज, और जो आपके बेसिक सब्सटेंटिव लॉज हैं, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, और जो बेसिक क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये सब हैं आपके। तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये यू शुड नो दैट बिफोर हैंड, यू शुड नॉट वेट फॉर दैट, बिकॉज अगर आपके पास केसेस नहीं है खुद के और आप लिटिगेशन नहीं कर रहे अभी, देन एंड यू चलो मान लिया कि चलो आप एक्सपीरियंस से सीखना चाह रहे हैं, तो किसी के पास काम करोगे ना, देन वाई वुड समवन हायर यू इफ़ यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज, और बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आई वुड से, कोई हायर भी नहीं करेगा ना आपको। सो आई थिंक दिस अप्रोच इज फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव देयर इंडिपेंडेंट केसेस। अदरवाइज आई थिंक कि एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो फॉर गुड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको किसी के यहाँ काम करने के लिए भी, हायर होने के लिए भी, आपको यू हैव टू should know the law na basic. So this is what I wanted to discuss with you. Now it's your upon you ki how which approach you learn the law. Thank you.